Question 2b. Why was the Great Revolt of 57 confined only to North India? How did it change the character of British rule in the subcontinent? Explain. Now we have two sub questions here, and both of them are 10 plus 10, 20. तो ठीक है, not very difficult. अब इसमें I'll be very honest, I was little bit dismayed यूपीएससी पे कि भाई पहला सवाल आपने ऐसा क्यों पूछ लिया. This first question, why was the Great Revolt of 57 confined only to North India? This question is kind of old school question. ये research अब उसके आगे चला गया. This was an argument given to us 30, 40, 50 years ago. If you read latest books, I have one latest book here by Oxford paperbacks, edited by Biswamay Pati, 1857 Rebellion. Biswamay Pati, it's a fantastic book about debates in modern Indian history and society. Here you will see that they have done a lot of research about the spread of the revolt outside Ganga Valley, in Bundelkhand, in Narmada Valley, in Odisha, in South India in some pockets, in Kolhapur, in Hyderabad, etc. So technically it was not confined to North India alone. Tribals and अलग लोगों के दलितों के कंट्रीब्यूशन के अलग किस्से नए नई कहानियां हमें पता चल रही है कि it was much more expansive than it was thought to be earlier. So I was hoping some kind of question on this for last many years. आज तक उन्होंने पूछा नहीं है. Somehow होपफुली पूछ ले कभी. तो क्योंकि इसमें उन्होंने क्या कह दिया है कि why was it confined to North India only, मतलब you don't doubt, you don't question it was not confined. There is no room of critical analysis. We have to take it as granted, the statement, and explain it why. Then we have to go back to the old school history. I would still want to introduce it by saying that although, ऐसे मैं शुरू में ऐसे लिखूंगा, although as per the latest research done by many historians including Biswamay Pati, he is from Odisha himself, Biswamay Pati, the expanse of the revolt of 57 was found outside North India also, and it was much more pervasive than thought earlier. Still, the intensity of the revolt was much more in north than in other parts of India. आप ऐसे लिख दो, काउंटर फैक्चुअल है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंट्रोड्यूस तो कर दो कहीं ना कहीं, इतना अच्छा मुद्दा पता है तो. बट एनीवे, so although it happened this way, then you are repositioning the question in different way कि भाई why it was more intense in north. और वहाँ कारण बड़े सिंपल है, not difficult at all. Firstly, you go to the composition and exploitation of Bengal army. First and the most important, क्योंकि शुरुआत म्यूटिनी से होती है, तो you have to start with Bengal army first. It was composition, high caste character. Our Brahmins, Rajputs, etc. were those who followed all the caste norms, very sensitive and touchy about lots of things. So high caste character, educated literary caste came there. So उसके उनका response भी अलग किस्म से, you can't just exploit them the way you want very easily. You will have to face front. And then exploitation from बर्मा और असम से लेके अफगानिस्तान तक पूरा नॉर्थ इंडिया जो है, इट वाज कॉन्कर्ड बाय बंगाल आर्मी, प्राइमरीली बाय बंगाल आर्मी. जब से आर्मी बनी थी तब से लेके उसकी इतने रैपिड ग्रोथ हुई है, हर साल 2 साल में कोई ना कोई महायुद्ध चल ही रहा है, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रनिंग ऑल द टाइम. एंड देन उनके कास्ट नॉर्म्स फॉलो नहीं हो पाते, वो सारे तो जो एनफील्ड तक बात चली जाती है, जो कुछ है. दैट इज वन थिंग. द सेकंड थिंग इज अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. Here you come to Mahalwari system, and this is what we know already in detail. The third thing would be about ruthless liquidation of intermediaries. देखो, हम ये कारण नहीं गिना रहे कि 57 क्यों हुआ,
हम ये गिना रहे हैं कि वो नॉर्थ में ज़्यादा इंटेंस क्यों था, why was it so intense in north. So we have this very famous sentence given in the book by बंदोपाध्याय, क्लासिक पार्टीशन में, हॉल्ट मैकेंजी एंड मेलेंकली रिवॉल्यूशन, तो पे ले लेके तालुकदार की गढ़िया उड़ा दी सब जगह जाके, स्पेशली यूपी में. एंड देन वी हैव जस्ट बिफोर 57 in last 10 years we have Dalhousie and his labs, doctrine of labs, which was operated mostly in North India, and that too when it came to Awadh it was a shock. अवध ही वो जगह थी जहाँ से मैक्सिमम सीपॉइज वे रिक्रूटेड, जहाँ से मैक्सिमम पेजेंट्स वे एक्सप्लॉइटेड. सीपॉइज, पेजेंट्स, अवध, सो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब कुछ साथ में आ जाता है. सो ब्रिटिश मैनेज्ड टू एंटागोनाइज ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एट द सेम टाइम. सब साथ में आ गए, बात खत्म. बट यू ऑल्सो हैव टू राइट देन कि व्हाई इट वॉज नॉट सो इन साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट एटसेट्रा. तो अगर आप साउथ की बात करोगे, ईस्ट की बात करोगे एंड वेस्ट की बात करोगे, तो साउथ में, और अदर आई वुड से नॉर्थ वेस्ट. इन केस ऑफ साउथ you have had continuous rebellions before 57. It is given in many books that South was not silent. South के रिवॉल्ट पहले हो चुके थे और पहले दबा दिए जा चुके थे. We have from different civilian revolts like Diwan Melo Tampi. We have army में rebellions like Vellore Mutiny. We have peasant rebellions like Veera Pandya Kotta Bomman. तो आर्मी को हो, सिविलियन के हो, पेजेंट के हो, ट्राइबल के हो, कित्तूर के रानी चंदम, lots of things are there. So you will see there are lots of stories where different rebellions had been happening for almost 1 century and they had been suppressed. तो साउथ में जान खत्म हो गई तब तक. Secondly, come to East India. ईस्ट में भी यू कैन सी फ्रॉम फकीर सन्यासी रंगपुर से लेके सब दबा दिया गया था बंगाल में. एंड बंगाल मिडिल क्लास was infatuated with westernization, English language, so they opposed it or stayed neutral. Then you come to northwest. In case of northwest, you will see that Punjab, Sindh recently conquered, and the Sikhs and Gurkhas and especially the Pathans. पठानों को तो अंग्रेजों ने ऐसे लालच दे कि भाई देखो पठानों, आप सदियों से इंडिया पे हमला करके लूटपाट कर रहे हो, हम आपको और एक मौका दे रहे हैं, रिक्रूट हो जाओ, वी हैव टू रिकॉन्कर दिल्ली. So northwest में there was actually a kind of an opportunity given to other people to recruit, to get recruited to loot and then reconquer. तो नॉर्थ इंडिया को रिकॉन्कर करने में सिखों ने, गुरखाओं ने एंड पठानों ने काफ़ी हेल्प करी अंग्रेज़ों को. तो उसकी कहानी अपनी अलग ही है. सो वी कैन नॉट गो इनटू लॉट ऑफ डिटेल्स. 10 मार्कर है, मतलब यू हैव 2 pages. ऑन वन साइड यू मेंशन इंट्रोडक्शन, यू ऑल्दो लेटेस्ट रिसर्च से 700, फिर भी नॉर्थ में इंडिया से ज़्यादा थी. Then you mention this thing in 1 page, 1.5 page, and then you talk about in half page the story of other, and then conclude with ठीक है, therefore it was more intense in north. ठीक. Then you come to the next part. अच्छा, comments. I think because no united Mughal empire existence in South India, higher cultural and political conquest till 57. ठीक है सर, नोट्स भी फ्री में दिला दीजिए हिस्ट्री ऑप्शनल के. स्टडी IAS कौन है भाई तू? आई डोंट नो विच अकाउंट इज दिस, बट प्लीज आके मिलिए, बात करिए. ठीक है, तो कम टू द सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन. वो क्या है? How did it change the character of British rule in the subcontinent? Now this part is very easy. It's a very standard question that basically British wanted to avoid the repetition. तो इस लाइन को लिखना बड़ा ज़रूरी है to show that this was such an intense revolt that British almost had to reconquer entire North India, and they almost came to the point where they would have to leave India. Now after the reconquest, they wanted to avert the situation where such kind of revolt would occur again. So all the reforms that they took were from the point of view of averting the repetition of 57. उस लाइन को लिख के then you list the revolts. कि crown took over the company, Mughal Badshah was sent to Rangoon, and the crown became the ruler directly. Then we have financial reforms, administrative reforms, reforms in civil government, the civil bureaucracy, in army, in police, in judiciary.
स्पेशली इन आर्मी द प्रोपोर्शन ऑफ इंडियंस वर्सेस यूरोपियंस, किसको कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, कौन अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाएगा, क्रुशियल पोस्ट पे जाएगा नहीं जाएगा. यू स्टार्टेड एसोसिएटेड इंडियंस विद आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मेरे सिविल सर्विस में हो या इन एक्ट ऑफ 1861 उसके अंदर जो हुआ हो, सम इंडियंस वर नॉमिनेटेड. दे abandoned the policy of lapse and annexation. Rather, the princes, zamindars, and talukdars, who were supposed to be the enemies earlier, now they became friends. They became the props of government. रातों रात दुश्मन दोस्त बन गए because they had helped them in 57. And for peasants also, they formed some kind of policy of land rent control ताकि peasants को गुस्सा ना हो आगे फ्यूचर में जाके. And the social policy, no more religious reform, social reform, they became quite conservative. बस यही तो लिस्ट है और क्या है, टिपिकल आंसर है.